neglected, shunned, and even mocked at. These differently abled children were living a reclusive life. Until this gritty teacher took it upon herself to start a school that would provide these special children the love and compassion that they had been deprived of. Giving them an opportunity to change their lives, Manorama Joshi started Mangaldeep in this town of Almora in 1998. दरअसल मन में रहता था कि एक कैसी शिक्षा है, क्या जो बच्चा नहीं है, उसका आईक्यू नहीं है, उसको नहीं पढ़ाना चाहिए, पर स्कूल संस्था उसको प्रमोट करते चली जा रही है, उसका नुकसान कर रही है। इस तरह की फीलिंग हर समय होती रहती थी, आई है मेरे मन में, और शायद इसी का प्रतिफल था कि मुझे इसमें काम करना पड़ा। She went from door to door, village to village to seek out these children in order to provide them the special care they need. Dealing with ignorance, social taboos and parental embarrassment was an uphill task. But undeterred, Manorama convinced parents to send their children to her school. बच्चे को एक कर्ज मानते हैं और छिपाए रखते हैं, उसका सोशलाइजेशन नहीं होता, उसके विषय में पूरे ही देश में इतना कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो वेल टू डू फैमिली के हैं, वो ही वहाँ तक जा सकते हैं। जिन बच्चों को आज अवार्ड वगैरह मिले हैं, उनके घर में तीसरे बार में मुझे एंट्री मिली है, और पैदल सब घर को लौटते थे। मैं पैदल उल्टी दिशाओं में जाके घर घर अप्रोच करती थी कि मुझे अपने बच्चे के विषय में बता दो, डाटास कलेक्ट किए। With a little training, Manorama devised her own methods of teaching and trained her staff of 14 teachers. Today, Mangaldeep is a learning and vocational center for nearly 50 children suffering from disabilities such as Down syndrome, autism and even poor vision. हमने एक कमरे में 6 बच्चों का घर की रजाई गद्दे ला करके तक्की लगा के एक वातावरण बना के शुरुआत की थी, छिप करके। हमारे पास एक बॉल भी नहीं था, फिर मैंने कई लोगों से खिलौने इकट्ठे किए, अपने परिवार में मांगे, तो फिर कुछ सामग्री हमारी आ गई। पहले तो बहुत दिक्कतें आई, गांव वाले भी दिक्कत करते थे, पागलों का स्कूल ये वो वैसा, लेकिन बाद में इधर कई सालों के बाद 3-4 साल तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे कि अब चलेगा या नहीं चलेगा। Both Rakshita and Raju got a new lease of life after they joined Mangaldeep. Rakshita has seen a marked improvement in her learning abilities and looks forward to learning classical Indian music at the school. Raju, on the other hand, could not even walk straight till a few years ago. Now he actively participates in sports and has won a medal at the Olympics for special children held in Athens. They have not only made a mark for themselves but have also made their parents extremely proud. मैडम का आभार जब व्यक्त करूंगी कि उन्होंने ये स्कूल खोल के मेरे लिए, ये स्कूल औरों के लिए मेरे लिए खोला, कि मेरी सारी समस्याएं हल हो गई। Students are also trained in various vocations such as craft making, candle making, music and more, all in an attempt to try and earn back what they had lost the most, their self-esteem. Her unique teaching methods have struck a chord with every child in the school. एक्चुअली जो सब्जेक्ट हमने लिए हैं, वो सब्जेक्ट ऐसे लिए हैं जिसको हम पूरे कॉन्फिडेंस से देखते हैं कि व्यवहारिक जगत में उसके साथ तालमेल बिठाया जा सकता है। ढेर सारे सब्जेक्ट मैटर से जुड़े हुए पिक्चर्स, ढेर सारे शब्द चित्र बना करके एक छोटा सा डिक्शनरी बनाने की कोशिश मैंने की। ऐसे सिंबॉलिक सिस्टम से, और नाटक भी इसमें चलता है, एक्शन इसमें चलते हैं, ब्लैक बोर्ड में लगातार हम सेंटेंस लिखते जाते हैं, बच्चों से अभिनय भी कराते हैं, तो उनके मस्तिष्क में एक चैप्टर पूरी डालने की कोशिश करते हैं, और वो
इंजॉय करने लगे। जिस मोमेंट वो इंजॉय करता है तो ढेर सारे डायरी लेके आते हैं, इस शब्द का चित्र बनाइए, इस शब्द का चित्र बनाइए और इस शब्द का हमें अर्थ बनाइए, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। An eternal optimist, Manorama has faced many challenges, but she feels the blessings have been even more. With the support from her family, teachers, and some well-wishers, she has kept the Mangaldeep banner flying high. We salute this extraordinary educator for her grit, determination, and compassion. बच्चों से मुझे चाहे एक अच्छा नागरिक बन जाए, मंगलदीप के होकर बदनामी न कमाए, उनके मन मजबूत हों, उनका जीवन सरल हो और हर पल उस कम्युनिटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए, उस लोगों के लिए, इस देश के लिए जुड़ने के लिए हम कृत संकल्प, हम उनको जोड़ सकते हैं अपनी धरती से, ऐसा संकल्प है। धान और गेहूं में मेरा लागत ज़्यादा था और आमदनी कम था। नए नए खेती के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती थी। सही समय पर और सही बीज हम लोग को नहीं मिल पाती थी। Long cropping cycles, minimal returns on investments. A small and marginal farmer finds himself engulfed in this agricultural crisis. But joining hands with these farmers is this duo. IIT graduates Shashank Kumar and Manish Kumar, who turned to the fields of Bihar rather than air-conditioned offices of multinational companies. दादाजी हमारे किसान थे, खेती करते थे, गांव में हम लोग का आना जाना हमेशा से रहा है। किसान वर्ड सुनते ही लगता है कि यार कोई एकदम ही मजबूर इंसान जो कि बहुत गलत से लग रहा है कि वो गलती से खेती कर रहा है। और जब हमारे यंग जनरेशन के लोग खेती में नहीं आ रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब ट्रेजेडी होने वाला है अगले 10, 15, 20 साल में। एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। तो ये एक सही टाइम है जब हम लोग इस सेक्टर में आएँ और यूथ को मोटिवेट करें। Determined to give a new lease of life to these isolated farmers, Shashank and Manish made it their mission to resolve their innumerable issues, and so began their journey in October 2010. We started our journey from 13 farmers of 3 neighboring villages. We used to think that marketing of the farm produce is the only problem or probably the biggest problem for farmers because they are not getting right price. So very simple thought when we got that why not just to take the produce from small farmers, consolidate and take it to the bigger market. But when we started our work, then we realized, we learned that that's not something which is their bigger problem. Their actual problem begins in the beginning of season itself, that which crop they are growing, right, which variety they are taking and how they are moving ahead in season, right. And then we thought that no, we must intervene at these steps. The duo devised a business model through which farmers receive seeds for cultivation. They are trained to cultivate seasonal crops suitable to the soil condition of their farms. And lastly, they get a cash return for their farm produce right at their doorsteps. We have derived a business model around farmers and those institutional buyers. So at one side, to farmers, we provide end-to-end services right from crop selection to marketing, and on the other side, to buyers, we provide them quality produce at competitive price with full scope of customization and traceability. These techies decided to create local entrepreneurs who would reach out to farmers in their locality. And so came the idea of establishing Dehat centers. Adept with services ranging from seed distribution to procurement of farm produce, there are now 10 Dehat centers operational in different districts of Bihar. देहात के जो हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो देहात चलाते हैं, वो वहाँ के लोकल स्थानीय होते हैं, ताकि उनको हर कुछ पता होता है कि कैसे यहाँ के लोगों की सोच है, क्या यहाँ का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, एक्चुअली यहाँ के किसान को क्या चाहिए। Shashank and Manish founded Farms and Farmers in February 2011 and enrolled more than 50 scientists to train farmers about soil testing and methods of cultivating different varieties of crops.
और मेनली ट्रेनिंग दो तरह की होती है। एक ट्रेनिंग में वैसी बातें बताना जो किसान को पता नहीं है, और दूसरी वो जो किसानों की समस्याएं उनको दूर करना। उदाहरण के लिए मिट्टी जांच करवाना चाहिए, किसानों को पता है मिट्टी जांच करवाना चाहिए, लेकिन क्यों करवाना चाहिए फ़ायदा नहीं पता है। नए फसल की जो जानकारी है, कुछ नए फसल करना है, राजमा करना है, इससे क्या फ़ायदा होगा। Like most farmers across the country, Arun Kumar only cultivated traditional crops, and with meager returns at the end of the season, it became difficult for him to sustain a living. But after the intervention of Farms and Farmers, he started growing seasonal crops such as kidney beans, and the experiment turned out to be a very profitable one. साल में हम लोग 2 ही फसल उगा पाते थे, धान और गेहूँ, और उससे किसानों को जितना लागत होता था उससे कम ही आता था हमारे की प्रोडक्शन उसका। तो इसलिए मनीष बाबू से जुड़ने के बाद वो मैंने सब्जी की खेती, राजमा की खेती, इसमें अच्छा खासा मतलब कि हम लोग बेनिफिट आ रहा है। और सुविधा क्या है कि इनका बीज वगैरह भी हम लोग के घर पर ही मुहैया होता है, और बेचने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि हम लोग कहाँ इसको बेचे, मार्केटिंग करेंगे। Now a team of 8 farms and farmers operate from their head office in Patna, where a group of graduates from premier engineering colleges are challenging old notions and reaching new thresholds, working with the sole aim of uplifting small and marginal farmers. लगभग 5 साल के अंदर कम से कम 1 लाख किसान हमारे होंगे, और 1 लाख किसान होना बड़ी बात नहीं है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि 1 लाख हमारे हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फार्मर्स होंगे, जो FNF के ब्रांड एम्बेसडर्स कहे जाएंगे। The beginning of a revolution in agriculture, a boon for thousands of farmers in Bihar. Manish and Shashank are our grassroots soldiers determined to change the face of farming in India. We see a kind of happiness, we see a kind of hope in their eyes. It's been 3 years, hardly we are breaking even, right? But still, we are so motivated, we are so passionate, and the entire team is so, determined to continue their whole life in agriculture. An embodiment of courage and tenacity. Shravani Pawar is on a mission to empower the women of Hubli. Having completed her master's in social work, she was working with an NGO when Shravani, along with a friend, came up with a unique idea called Safe Hands 24/7. Initially, I had lots of idea, like if we do something like microfinance or some sort of occasional training will help these women. But later, we quickly realized that this is not the way to help these women. After meeting lots of people, realized that there is a need of security services, especially lady security services. We chose the unthreatening area where women can play a vital role, and clients prefer to have the lady guards such as schools, malls, hospitals. We heavily recruit the ladies from slums and rural areas via self-help groups, and we also give an ad in a paper to recruit them. Founded in 2009, she has put her heart and soul into this wonderful cause. A woman of strength, Shravani chose to stick by her decision even after her partner decided to leave Safe Hands. It's been 4 years, and this crusade to make women self-reliant has only grown stronger. ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂದಿಂದ ಭಾಳ ಇದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ. ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸೇಫ್ಟಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಭಾಳ ಇದು ಐತತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. पहले मैं सिक्योरिटी काम करती थी 3 साल से, अभी तो सुपरवाइज़र बनी हूँ 7 महीना हुआ। बहुत अच्छा लगता है, घर में तो मैं भी पैसा देती हूँ, बहुत अच्छा घर चलता है। पहले तो थोड़ा तकलीफ थी, अभी तो कुछ नहीं। Transforming lives and fortunes with her extraordinary venture, Safe Hands 24/7, Shravani imparts knowledge, power and a sense of self-assurance to hundreds of women.
not only does Safe Hands provide intense training to these women, but also employs them as security guards, housekeeping personnel, and administrative officers. Especially in the security field, what we train them about is what is the meaning of security, what is the importance of security, types of securities, and we also train them in the physical training. In the physical training, we teach them about their physical fitness, and we also teach them for self-defense, and we also give them a knowledge about firefighting, so that while they are working, if something happens, there is many fire incident, they should be able to handle the situation. And we also train them on crowd management. So we have a different syllabus to train all these security guards. It took a lot of convincing and cajoling before Shravani could get the people of Hubli to join her mission. But today, Safe Hands 24/7 has a strength of over 350 employees. It helps promote gender equality and provides women with a sense of confidence and financial stability. Safe Hands is ground only just 300 to 350, but now we are planning to expand it to different districts of Karnataka and rest of the other parts of India also, because we want to create an opportunity for every woman in India to have an economic and social independence. So our vision is not limited to any district or state. We are planning to expand overall in India. Shravani Pawar has chosen to take the path less trodden. With her grit and determination, she has managed to bring along rays of hope and happiness in lives of hundreds of women.